सुपर 12 के आज 2 मुकाबले आपने देखे, लेकिन एक दिन में एक ही अपसेट आपको देखने को मिला, क्योंकि न्यूजीलैंड ने हराया ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में, और दूसरे मैच की हम बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान। भाई सबका मन तो यही था, स्पेशली जो इंडियन फैंस हैं, कि अफगानिस्तान को जीत मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि सिर्फ 112 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए अफगानिस्तान ने, और ये आसानी से 5 विकेट रहते चेस कर लिया इंग्लैंड की टीम ने। मेरे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। आप देख रहे हैं बैटविक 7 प्रेजेंट्स CricTracker रन की रणनीति। मैच समरी आपके सामने है। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की, इंग्लैंड ने टॉस जीता था और 112 रन बनाए अफगानिस्तान की टीम ने, जिसमें सबसे ज्यादा रन इब्राहिम जादरान ने बनाए, 32 गेंदों में 32 रन। उसके अलावा उस्मान गनी ने 30 रन बनाए, और कोई खिलाड़ी ज्यादा रन नहीं बना पाया। और सैम करन को 5 विकेट, फाइफर उन्हें मिला, 10 रन उन्होंने सिर्फ दिए, और उन्हें ये मिला 3.4 ओवर्स में। असगर अफगान और साथ ही फारूक इंजीनियर मेरे साथ हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत है असगर भाई। 112 रन स्कोरबोर्ड पर लगाना, क्या यही आपको मेरी आवाज आ रही है असगर भाई? बिल्कुल आ रही है। हाँ, 112 रन, क्या जब 112 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए अफगानिस्तान की टीम ने, क्या वही आपको लगा था कि ये मैच यहां से बचाना अफगानिस्तान के लिए मुश्किल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कि मैंने तो पहले भी बोला था कि हमें थोड़ा रन बोर्ड पे डालने चाहिए। 112 रन गुड इनफ स्कोर नहीं है, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन ट्रैक पे, क्योंकि फिर वो आपके अगेंस्ट जो बैट्समैन है वो रिस्क नहीं लेंगे। जब तक आपके बॉलर के अगेंस्ट बल्लेबाज रिस्क नहीं लेंगे तो आपको विकेट बहुत आसानी से नहीं मिलेगी। मैंने पहले ही बोला कि हमारे बॉलिंग नो डाउट ज़बरदस्त कम्बिनेशन है हमारे बॉलिंग की, स्पिनर्स की स्पेशली, मगर हमें थोड़े रन बनाने चाहिए। जो मैंने पहले ही बोला था, हमें इस पे बहुत काम करना चाहिए। अभी बहुत मैचेस बाकी है, इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि सारी टीमों ने जो हमारे बैट्समैन के अगेंस्ट बॉलिंग करनी है, वो बैक ऑफ लाइन बॉलिंग करनी है, उनको पीछे डालनी है उसको, क्योंकि बाउंड्रीज बड़ी है। हमारे बैट्समैन वहाँ से सिंगल उसको थोड़ा बनाना मुश्किल मारते हैं, जब मारेंगे तो टॉप एज होने का खतरा है, क्योंकि बॉल अपनी जगह से थोड़ा ज्यादा बाउंस ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो ये है कि जब तक हम 150 प्लस रन नहीं बनाएंगे, हम अगेंस्ट टीम पे प्रेशर नहीं बना पाएंगे। 120 130 स्कोर इनफ स्कोर नहीं है, क्योंकि वो अब मुखालिफ टीम को पता है कि वो हमने आराम से चेस करना है, बॉल टू बॉल रन, रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है। जब तक हमारे बॉलर्स के खिलाफ कोई रिस्क नहीं लेगा, हमारे बॉलर्स विकेट भी नहीं ले पाएंगे और मैच भी नहीं जीत पाएंगे। तो ये है कि हमारे बल्लेबाज को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और थोड़ा रन बनाना चाहिए। फारूक सर, 112 रन सिर्फ बनाए अफगानिस्तान ने, इंग्लैंड को 5 विकेट से जीत मिल गई। इंग्लैंड आज आपको, हाउ गुड दे वर टुडे, also knowing the fact that maybe you have a soft corner for England, your test debut, your ODI debut, both were against England. Yes, that's right. Yes, I played one ODI, one World Cup match, and I got man of the match. So I mean, I batted once rather, and that was against East Africa. But coming to this match, I think Afghanistan made look England a better side than they actually are, because in a way, Afghan batsmen were in a difficult situation, as Asghar very rightly pointed out, because they had to score, somewhere minimum in the region of 160, 165 to make a game of it. And to do that, they've got to take greater risks against some, pretty good bowling. But the funny part of it is that the most average bowler in the England team is Sam Curran. I mean, he's not really such an outstanding bowler as to claim 5 wickets for only 10 runs. But Afghanistan batsmen were targeting him. They thought he's the guy who we can get runs against. He's the weakest link. And that's why they had a go at him. And thanks to some good catching, good outfielding by the England fielders, Sam Curran managed to get the best figures of 5 overs, 10 runs in 3.4 overs. I mean, the best figures by an Englishman. He's walked into the record books
without being really considered as a class bowler. You can understand Mark Wood getting those figures. I don't want to take any credit away from the young boy. He bowled well, but the Afghanistan batsmen gave the wickets away. They threw the wickets away. And because they wanted to target Curran, they thought Curran is the easiest guy to hit. And which they're not wrong, which they're absolutely right. Maybe Jonathan Trott must have told them that if at all you're going to go against some bowler, go against Sam Curran, because he'll be the easiest one to hit, the left arm ball coming in. But Curran is a clever bowler. He bowls a lot of change of pace and all that. But Afghanistan batsmen just couldn't fathom with his bowling and gave him those fabulous figures of 5 for 10. England made heavy weather in chasing such a small total of 110. Perhaps it was too easy, perhaps the first match, perhaps a bit of nerves, because England should have won this match much more comfortably than what they actually did. But all credit to the Afghans. They tried their best, showed their inexperience at international level. And as they get more exposure against better teams, I'm sure in years to come, Afghanistan will be a force to reckon with. असगर भाई, कहाँ आज गलती हुई अफगानिस्तान से? पहले तो स्कोर बोर्ड पर इतना कम टोटल लगाना, क्या माइंडसेट के साथ आपको लगा? क्या बॉडी लैंग्वेज आपको दिखी अफगानिस्तानी प्लेयर्स की आज? एक तो हमारे बल्लेबाजों को बहुत ट्रबल हो रहा था अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स के। मुझे उस तरह कॉन्फिडेंस से नहीं लग रहे थे। तो मेरे ख्याल में आज अगर आप देख लो, हमने तकरीबन 63 डॉट्स किए। 63 डॉट्स का ना मतलब इट्स मीन 52-53% हमने डॉट्स किए। तो हमने 112 रन सिर्फ 57 गेंदों पे बनाए हैं। अगर हम ये 57 गेंदों के बजाय अगर हम 70 बॉल या 75 बॉल पे 75 बॉल पे हम रन बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा स्कोर 140, 145, 150 तक हो जाएगा। एक तो हमारा डॉट्स बहुत ज्यादा होता है, हम स्ट्राइक बिल्कुल रोटेट नहीं कर पाते। सर्कल में भी हम जो है ना वो फर्स्ट 6 और आपको थोड़ा पॉजिटिव क्रिकेट खेलना पड़ेगा, आपको थोड़ा अटैक करना पड़ेगा। अटैक का मतलब ये नहीं है कि बस आप बॉल को ना दो आप घूमो, आपको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हजरत का और गुरबत का काफी एक्सपीरियंस है। तकरीबन दूसरा वर्ल्ड कप ये लोग खेल रहे, एशिया कप खेल गए, काफी क्रिकेट खेल चुके हैं। मतलब ये नहीं कि यंग लड़के, अब तो ये सीनियर प्लेयर है, अब इसको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब तक हम टॉप ऑर्डर 6 ओवर अगर फर्स्ट 6 ओवर में थोड़ा रन नहीं बनाएंगे तो बाद में ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा रन बनाने मुश्किल है, क्योंकि वहाँ हिट लगना फिर मुश्किल है, बाउंड्रीज बड़ी है, बड़े शॉट लगना मुश्किल है, फिर हमें मिडिल में स्ट्राइक रोटेट करना पड़ेगा। मगर ये कि हमारा स्ट्राइक रोटेट में बहुत डिफिकल्टीज है, हम सिंगल डबल नहीं निकाल सकते। तो ये चीज है कि इस पे बहुत काम करना पड़ेगा, थोड़ा इस पे बात करनी पड़ेगी कोचिंग स्टाफ को, क्योंकि अभी कंडीशन नहीं है कि एशिया की कंडीशन है। यहाँ पे सारी टीमें जो है ना तकरीबन 15 to 16 to 14 आवर्स आपको फास्ट बॉलर डालेंगे ज्यादातर। अब हमारे साथ स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम हमारे 10-12 ओवर स्पिनर डालते हैं, मगर और टीम जो उसकी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है, और ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है जिसके पास अच्छे फास्ट बॉलर होंगे वो अच्छी बॉलिंग करेंगे। अल्लाह पाक ने हमें एक चीज दी हुई है स्पिनर्स, उससे हम काम चला रहे हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन की तरफ है, मगर फिर भी हमारे स्पिनर में इतनी क्वालिटी है, कोई इतने सख्त कंडीशन में आके बॉलिंग करते हैं। मैं फिर भी ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो स्पेशली बैट्समैन है उसको तो अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस करना चाहिए, थोड़े दलेर से ब्रेवनेस से क्रिकेट करना चाहिए, उसको थोड़ा दलेर होना चाहिए, बॉल से डरना नहीं चाहिए, अपनी जगह पे खड़ा होना चाहिए। जिस तरह मैं देख रहा था कोई 1-2 बैट्समैन वो बॉल से थोड़े डिस्टर्ब थे पेस से, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तो ये इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट आप खेल रहे हो, बड़ा क्रिकेट आप खेल रहे हो, तो इसमें आपको चाहिए कि आप अपने बॉल को आप बॉडी दे दो, उसके सामने आप खड़े हो जाओ। जब तक आप बॉल को बॉडी नहीं दोगे आप रन नहीं बना पाओगे। मेरे ख्याल में इस चीज पे थोड़ा काम भी करना चाहिए। अभी काफी मैचेस और भी बाकी है, टाइम भी बहुत है, तो मेरे ख्याल में इस पे काम बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए। बिल्कुल। फारूक सर, जो असगर ने बात की बिल्कुल ठीक है। आप उस रेपुटेशन पर हमेशा नहीं खेल सकते अफगानिस्तान, क्योंकि आप एशिया कप भी खेलते हो, आपके प्लेयर्स जाके बिग बैश लीग भी खेलते हैं, आईपीएल भी खेलते हैं, इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, तो कब तक आपको वो हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते रहेंगे कि आप अभी नए खेल रहे हो। अब आप काफी क्रिकेट खेल चुके हो, बहुत सालों से खेल रहे हो, आपके पास बड़े बड़े नाम है, तो इसे रिजल्ट्स में कन्वर्ट करना भी बहुत जरूरी है अफगानिस्तान के लिए। जिस तरह फारूक सर ने एक बात बोली कि अफगानिस्तान टीम जब तक बड़े मैचेस नहीं खेलेंगे उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा। मैंने एशिया कप में भी ये बात बोली
कि जब हम बड़े मैचेस नहीं खेलेंगे, अब हम वर्ल्ड कप खेल रहे, फिर इसके बाद पता नहीं अफगानिस्तान के मैचेस कब होंगे, बड़ी टीम के साथ, वो मेरे ख्याल में अगले वर्ल्ड कप में होंगे। तो ये मसला चल रहा है। इसलिए हमारी टीम का जो एक्सपीरियंस है ना, वो आयरलैंड और हॉलैंड और स्कॉटलैंड इसी लेवल पे हमारा अच्छा है। जब तक हम बड़े मैचेस नहीं खेलेंगे, हम वहाँ मैच नहीं खेलेंगे, अच्छा क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम यहाँ पे आगे नहीं जा पाएंगे। तो इस पे बहुत काम करना चाहिए, मैनेजमेंट स्टाफ को भी इस पे बहुत काम करना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए। फारूक सर, बिल्कुल, क्या आप इस बात से सहमत है? क्योंकि इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है अफगानिस्तान, और उसके बावजूद अगर ऐसे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सबको सोचने की जरूरत है, मैनेजमेंट को सोचने की जरूरत है, कप्तान को सोचने की जरूरत है। हाँ, तो आई मीन उन लोग के एक्सपीरियंस तो है, आजकल इतने खेलते हैं बिग बैश में, आईपीएल में खेलते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अफगान प्लेयर आईपीएल में खेलेंगे, बिग बैश में, और पूरी दुनिया में खेले हैं। मगर एक्सपीरियंस एज अ टीम उन लोग को ज्यादा चाहिए, ज्यादा एक्सपोजर चाहिए। दे शुड प्ले more test cricket against other countries, to get that experience, to get the feel of international grounds and all that. Just individuals like Rashid Khan, Mohammad Nabi, just isolated cases is not enough. They should collectively play as a team. I'm not even sure if Jonathan Trott is the right man to be the coach for Afghanistan. I mean, I don't know. He was very reluctant to travel when he was playing. Now he's traveling to Afghanistan. So I mean, I just couldn't. His psychology, ये बहुत चीज है, वो मैं नहीं समझता हूँ, because I never suffered from that. But I have every sympathy for people who genuinely suffer from anything like that. But I'm not sure whether he's been brought in for Afghanistan to play, to improve them in Test cricket or in T20 cricket, because Jonathan Trott wasn't exactly a T20 player, and but to pick him as the thing, they've taken a decision, so they've got to stick by it. Good luck to him, really, So for me, Afghanistan players need more exposure to play against better sides, and I think with the ICC format now, they played against sides like Netherlands, Sri Lanka, and all that, but they need to play against slightly better opposition, like India, Pakistan, England, Australia, New Zealand. I mean, earlier game, New Zealand showed us how much improvement they made under Devon Conway, and they showed the whole world that they can compete on the international field. They are not chokers. But what I love about New Zealand, sorry to talk about New Zealand cricket, but they played today, but their sportsmanship was so good. When they lost the game at the last ball against England at Lord's, they didn't say a word. They sportingly, any other team would have been up in arms with Ben Stokes, the ball touching his bat and all that. But New Zealand didn't say anything. So really, we admired New Zealand for that and the sportsmanship. So I'm so glad that they won today, and won handsomely against their arch rivals, Australia, which will have given them a lot of confidence. And I'm sure New Zealand will be a force to reckon with the very good run rate and great victory over Australia. So they will help that group very much to qualify. असगर भाई, मैं जो फारूक सर ने बात बोली, जॉनथन ट्रॉट को लाया गया है, क्या आप भी इस बात से सहमत है? क्या उनका रोल अभी पूरी तरह से डिफाइन नहीं है? वो T20 क्रिकेट के लिए लाए गए हैं या फिर टेस्ट क्रिकेट को बेहतर करने के लिए लाए गए हैं? आपकी क्या राय है इस पर? मैं फारूक सर से बिल्कुल सहमत हूँ, उससे बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ जो फारूक सर ने बात की है। आपको एक तो ये है कि जो हमारा जो क्रिकेट का कंडीशन है वो डिफरेंट है यूरोप से। तो पहले तो हमारे जो प्लेयर्स है, हमारा सब कुछ है ना एशिया, पहले तो हमारा मैनेजमेंट स्टाफ कुछ है कि वो एशिया से, हमारे एशिया में बहुत बड़े बड़े कोचेज है, लेजेंड प्लेयर गुजर चुके हैं हम, क्योंकि हमें आपस में समझना आसान है। हम यूरोपियन के साथ ओके, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है अजहर भाई के इंटरनेट के साथ। चलिए,
फारूक सर, हम बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड प्लेड रियली वेल टुडे। जॉस बटलर ने शुरुआत करी, 18 रन बनाए। हालांकि एक वक्त ऐसा लग रहा था जब बेन स्टोक्स आउट हुए 2 रन पर, मोहम्मद नबी ने उनका विकेट लगा कि शायद यहाँ थोड़ा सा गेम जो है वो फंस सकता है। लेकिन फिर उसके बाद लियम लिविंगस्टन और मोइन अली ने मिलकर जो पारी को आगे बढ़ाया और 5 विकेट से जीत हासिल कर ली। क्या आपको भी उस टाइम लगा कि शायद अफगानिस्तान यहाँ पर वापसी कर सकता है? जरूर जरूर आ सकते हैं, क्योंकि बेन स्टोक्स का पॉलिसी और ब्रेंडन मैकलम का पॉलिसी लपेटबाजी है। माने दे आर गोइंग टू गो फॉर रन्स इन एनी फॉर्मेट, इन टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट। अभी चले तो चले, नहीं तो कभी अटक जाए उन लोग। अभी सो फार दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल, बट दिस फॉर्मूला अभी लपेटबाजी का will not always work in test cricket, because test cricket they could really come to a problem. One day cricket में और T20 cricket में तो जरूर चलेगी उसकी, but I'm not sure if that policy will work for test cricket. But at the moment T20 cricket में स्टोक्स को मालूम है कि उसके बाद लियमस्टन, ब्रूक बहुत स्ट्रोक प्लेयर है. Even Sam Curran can bat very well. There's Moeen Ali. England have got a very long batting lineup, and that is why I fancied England to be one of the teams to qualify, in the last 4. Abhi, they've got a good bowling attack, and this Chris Jordan, who's perhaps one of the best, bowlers in the closing stages. So, I mean, England have got a very, very good attack, very good pace attack, and a reasonably good spin attack. Liam Livingstone is not the best spinner in the world, but at least in T20, he's gaining more experience playing all over the world. But their strength is the batting and the fielding. But England are definitely a very good fielding side, but I wouldn't say they're the best fielding side in the competition. For me, the way New Zealand fielded today, I think they are definitely by far the best fielding side. And after New Zealand would be South Africa or Australia, because उन लोग के fielder बहुत अच्छे हैं. India are improving in the fielding, and Pakistan tomorrow is going to be, inshallah, a great match between India and Pakistan. I hope the weather doesn't intervene and we see an excellent game of cricket, an excellent sportsmanship between the two countries. Because as players, I remember when I toured Pakistan, itna prem or affection mila tha mujhe, and when Pakistani players come to India, they're made so welcome and all that, So we don't want to go into politics and all that, but I hope it's an excellent game of cricket. Last time I heard there were some riots in England after the match and all that. I hope these troublemakers are very few and far between, and the good game of cricket is not spoiled, because on the pitch, both sides are willing to give the best, and let's hope inshallah, it's a great game of cricket tomorrow. It's a great match. And may the better side win. बड़ा मुकाबला तो होगा ही। आज के मैच के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन फारूक सर, I want your reaction on should India go to Pakistan for Asia Cup? I'm sorry, India what? I want your reaction on should India go to Pakistan for Asia Cup next year? Well, the government, I believe, says no. And you can't go against the government. That's what the cricket board is saying. I mean, the cricket board's secretary is Mr. Jay Shah, whose father is Mr. Amit Shah, and he's the government. So, I mean, he and Mr. Modi. So whatever they decide in their wisdom is who are you or me to say, this should be done, that should be done. They are the ones who decide and make decisions. And unfortunately, or fortunately, we got to abide by them. For me, surely there should be more cricket between the two countries. Yes, indeed. At a neutral venue, or India should travel to Pakistan? मैंने नहीं सुना आपकी आवाज थोड़ी. Come to India, but the government won't allow Pakistani cricketers to play in India. They can't even play in the IPL. Their umpires can't come and umpire. जो इंडिया पाकिस्तान को लेकर हाइप होता है, जब भी हाइप होगा, जब भी मैच होगा, तो वो क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है. तो क्या न्यूट्रल वेन्यू पर
इंडिया पाकिस्तान का मैच ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ना इंडिया पाकिस्तान आ सकता है, ना पाकिस्तान के प्लेयर्स इंडिया आ But सकते हैं। India and Pakistan do play neutral venues like Dubai. They played दुबई, ideal position, not far from each other. क्या वो And ज्यादा होना चाहिए? I'm sorry. क्या वो ज्यादा होना चाहिए? ऐसा ना हो कि सिर्फ एशिया कप में मिल रहे हैं और उसके बाद जरूर ज्यादा होना T20 चाहिए. वर्ल्ड कप या फिर वर्ल्ड कप Yeah, में मिल रहे हैं। but बहुत ज़्यादा ना, otherwise it loses charm. You see, you got to keep it. But I think once a year at least there should be some sort of competition. Well, Asia Cup they play, World Yeah. T20. So these are two competitions that certainly they play. Yeah, it would be nice if they played more. The more exposure between the two countries, because people would pay big money to go and watch. I mean, there is so much atmosphere. Unfortunately, in my time, we never played against Pakistan because the countries were at war. I played against every other country in Test cricket except Pakistan, which is unfortunate, really, because people in Pakistan have seen me play in England playing county cricket or in Test matches against, West Indies or Australia, New Zealand, everywhere. But I've toured Pakistan with Indian starless team, and I received so much love and affection there, and I really enjoyed touring the country. But the government rules are such that one can't go against, and who am I to dispute that? So, fortunately or unfortunately, we got to abide by that decision. We are not politicians. We are sportsmen. ऑलराइट, तो हम अपने व्यूअर्स से पूछते हैं ये फारूक सर, असगर भाई, कि हमारे व्यूअर्स क्या चाहते हैं? क्या अगले साल जो एशिया कप होने वाला है, क्या इंडिया को पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहिए, कोई न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप हमें जरूर भेजिए, और अगर आपके कोई सवाल भी है हमारे एक्सपर्ट से, तो आपको मेंशन करना है क्विक ट्रैकर को, और हमारा हैशटैग यूज करना है बैडब्रिक7, और आपका सवाल हम लेंगे यहाँ पर अपने शो पर। चलिए, आपको हम अभी तक फिलहाल दिखा देते हैं मोस्ट रन्स इन द टूर्नामेंट, मोस्ट विकेट्स इन द टूर्नामेंट, और साथ ही ये टॉप रन स्कोरर्स हैं 2020 वर्ल्ड कप के। सिकंदर रजा, उन्होंने 3 मैचेस में 136 रन बनाए हैं। इसके अलावा कुशल मेंडिस भी इस लिस्ट में शामिल है। विकेट्स अगर आप देखें, उन्होंने 7 किए हैं, और सैम करन ने एक मुकाबले में 5 विकेट्स अपने नाम कर लिए हैं। पॉइंट्स टेबल पर भी नजर डाल लेते हैं कि कौन कहां पर है। तो पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर अभी फिलहाल न्यूजीलैंड है। आज का मुकाबला उन्होंने जीता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसके बाद इंग्लैंड जो है मुकाबला जीतकर आ गया है दूसरे स्थान पर। कल भारत अपना पहला मुकाबला खेलेगा पाकिस्तान के खिलाफ, और यहाँ पर कवरेज जारी रहेगी। असगर भाई, अभी फिलहाल अफगानिस्तान के ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा होगा इस मैच के बाद? देखो, जब भी कोई टीम मैच हारती है तो सब अपसेट होते हैं, मगर अफगानिस्तान को जो है ना वो अपने सर ऊपर रखने चाहिए। ठीक है, हमने आज मैच हारा है, मगर हमने अच्छा क्रिकेट खेले, फिर भी हम कर सकते अच्छा और भी यहाँ पे। उसको थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में हारने से बंदा बहुत कुछ सीखता है। और जैसे ऑस्ट्रेलिया कंडीशन को इस पर बात करनी चाहिए, इस पर 2 दिन से मेरे ख्याल में होंगे, उसके लिए प्रैक्टिस करें। हाँ, ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा नहीं होगा, सब खफा होंगे, क्योंकि फारूक सर को पता है जब भी कोई टीम मैच हारती है तो बहुत खफा होता है। प्लेयर से ज़्यादा कोई भी खफा नहीं होता है, सबसे ज़्यादा जो है प्लेयर ही खफा होता है, क्योंकि वो ग्राउंड में दौड़ते हैं, भागते रहते हैं और मेहनत करते जीतने के लिए। जब वो हारते तो बहुत मायूस होता है। और तो मेरे ख्याल से तो बहुत खफा होंगे, हर सारी टीमें खफा होती है। ऑस्ट्रेलिया भी आज बहुत खफा होंगी, अफगानिस्तान भी बहुत खफा होंगी, मगर इस खफे का जो मायूसी होती है वो इसका मतलब ये नहीं कि वो गिर जाए। इसी के बाद अपने आप को खड़ा करना चाहिए और इन लोगों को सोचना चाहिए कि हमने आज इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, फिर भी मैच अच्छा हुआ, हम कर सकते थे, हम जीत सकते थे अगर हम थोड़ा और भी अच्छा कर लेते। ये एक प्लस पॉइंट है अफगानिस्तान के साथ, इस पर थोड़ा सोचना चाहिए, इस पर बात भी करनी चाहिए, इसमें प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, और थोड़ा अपने आप पर बिलीव करना चाहिए कि हम कर सकते। जब तक आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करोगे तो आप हारने के सामने हमेशा हर वक्त हारने का सामना करोगे। मेरा तो ये सजेशन होगी टीम को अपने आप पर बिलीव करे कि हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट, और हम जीत सकते हैं। जब तक आपका ये इरादा नहीं होगा तो आप नहीं जीत पाएंगे। तो मुझे पता है लड़के ये बातें करते, कप्तान ये बात करता होगा कि हम आज अच्छा क्रिकेट नहीं खेले हैं, मगर ये कि अगर हम थोड़ा अच्छा खेले तो शायद मैच और भी अच्छा होता, शायद हम जीत भी जाते। ये एक होप नजर है अफगानिस्तान को, क्योंकि अफगानिस्तान ने बॉलिंग जबरदस्त की है। हाँ, हमारी फील्डिंग थोड़ी इतनी अच्छी नहीं थी,
अगर हमारे फील्डिंग थोड़ी बॉलर को सपोर्ट कर लेते, शायद ये मैच और भी क्लोज हो जाता। बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे सबक यहाँ पर अफगानिस्तान लेगी और ये टीम है जो कि बाउंस बैक करना भी जानती है। अभी फिलहाल हमारा जो वक्त है वो चला है हमारे स्पेशल सेगमेंट सोशल ट्रैकर का, प्रेजेंटेड बाय बैकपिक 7। बकरी प्लेयर, वाओ व्हाट अ ट्विटर आईडी। इनका कहना है अफगानिस्तान's performance is enough to tell us the difference between UAE and Australian conditions। क्या आप भी इस बात से सहमत रखते हैं असगर भाई? क्योंकि एशिया कप और अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जितना डिफरेंस है यहाँ के कंडीशंस के, तो वो भी काफी फर्क डालता है। मैंने तो पहले ही बोला था कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया कंडीशन टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल अपोजिट है। क्योंकि एशिया में आपको पता है शारजाह में उधर आपको बॉल लो मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में आपको बाउंसी ट्रैक मिलेगी। तो इसलिए तो मैं ये चीजें बोल रहा था या मीडिया में बोल रहा था कि उस टाइम तकरीबन हमारे पास 7-8 वीक्स थे। मैंने बोला कि जब तक हम ऑस्ट्रेलिया में 6 वीक कैप नहीं लगाएंगे, बड़े टीमों के साथ मैचेस नहीं खेलेंगे, तब तक हमें आइडिया नहीं होगा। हाँ, हम 2-3 मैच और खेलेंगे, फिर जब हमें आइडिया होगा तब वर्ल्ड कप खत्म होगा। फिर ये मसला है ना, ये तो जाहिर बात है कि ऑस्ट्रेलिया का कंडीशन और दुबई का कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है, नो डाउट। मगर ये कि जो भी क्रिकेटर हो उसको हर जगह पे मेरे ख्याल में एडजस्ट करने में 1-2 मैच काफी होंगे। और अफगानिस्तान को 2 प्रैक्टिस मैचेस मिले, आज वर्ल्ड कप का मेन मैच अगेंस्ट इंग्लैंड मिला उसको। इन तीनों मैच में अफगानिस्तान को सीखना चाहिए। मेरे ख्याल में जो सही क्रिकेटर होते हैं और जो अपने आप पे बिलीव करते हैं, उसके लिए 2-3 मैचेस काफी होते हैं कि अपने आप को एडजस्ट करें। बिल्कुल, जो अगला ट्वीट था उसमें बेन स्टोक्स के बारे में बात कर रहे थे और बेन स्टोक्स ने हालांकि रन तो ज्यादा नहीं बनाए, 2 रन पर ही वो आउट हो गए थे, लेकिन बॉलिंग में उन्हें 4 ओवर में 2 विकेट मिली और उन्होंने 19 रन दिए। सुपर बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स की कहानी ही कुछ ऐसी है। जब उन्होंने शुरुआत करी उसके बाद उन्हें बैन कर दिया गया, फिर उसके बाद जो वापसी करी है उन्होंने, आई मीन व्हाट अ स्टोरी। एंड इट आल्सो टेल्स अस about life, that life will give you a second chance। फारूक सर, जो स्टोरी है बेन स्टोक्स की वो बहुत इंस्पायरिंग है। जरूर है, because you know he's fought his way all the time. He's come back, become England's captain, a very successful captain, and bolte hai na, he wears his heart on his sleeve. Mane bahut passionate hai, you know, in whether he's batting, bowling or fielding, he gives you 110%. You know, he sets a great example to the side. That is why when he's bowling, he's not the best bowler in the world, or he's not the best batsman in the world. But for effort, he's 100%. He puts 100% effort and 100% effort in whatever he does, batting, bowling, or fielding. And that's what makes him the Ben Stokes that he is, and the popular that he is, and the great player, great all-rounder that he is. So you will always see him. If he fails with the bat, he'll produce, do well with the ball. If he doesn't do anything with bat and ball, he'll hold some brilliant catches in the field, or his captaincy will be very good. Of course, he's not captaining the T20, but he's the first player I would pencil in the team, in the England and team. he always speaks his heart out। हमेशा अपने दिल की बात उन्होंने बहुत साफ तरीके से की है, which is very nice। हालांकि अब आईपीएल में हम उन्हें नहीं देखेंगे खेलते हुए। अगला ट्वीट देख लेते हैं क्या कह रहे हैं सोशल ट्रैकर पर हमारे ट्वीट्स आपको दिखा देते हैं। दिस इज टॉप क्लास कैचिंग फ्रॉम इंग्लैंड, अ लेसन टू लर्न फॉर अदर टीम, स्पेशली पाकिस्तान कैचेस विन यू मैचेस एज सिंपल एज इट इज। ये कहना है मीर आबिद का। बिल्कुल, ये तो सही बात है, बहुत ही जबरदस्त। This is exactly what I said in this morning show, that Pakistan are a very, very good side, but their fielding has let them down very badly in the last game. Their fielding has got to improve if they want to compete and beat India or become, champions. The fielding is so important. They've got very good bowlers. The bowlers, what they would feel really bad. Look, Pasina Kate, the batsmen, Babar Azam and Rizwan are superb players. But if the fielding lets you down, then you're letting the whole team down. So their fielding must improve. The person is absolutely right. I couldn't agree more with him. चलिए ठीक है, आज 2 बड़े मुकाबले हो गए, सुपर 12 के 2 बड़े मुकाबले। इंग्लैंड
बनाम अफगानिस्तान, इंग्लैंड को जीत मिली और उससे पहले जो मुकाबला हुआ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, वहां पर जीत मिली न्यूजीलैंड को। अब कल का दिन बहुत बड़ा है, सुपर संडे है, 2 मुकाबले हैं और सबसे बड़ा मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड और ये मुकाबला खेला जाएगा होबार्ट में। पूरा कवरेज यहां पर जारी रहेगा CricTracker पर। और दूसरा मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये बड़ा मुकाबला है, इसका सबको इंतजार था और ये खेला जाएगा MCG में। हालांकि हम आपको लगातार अपडेट्स यहां पर देते रहेंगे। अभी फिलहाल जो अपडेट आ रहा था मेलबर्न से कि 25% चांसेस है रेन के, हालांकि ये उससे पहले जो है काफी ज्यादा थे, कह रहे थे 70-75% चांस है, लेकिन आज काफी बारिश वहां पर हुई है। चांसेस ऑफ रेन अब इज लेस देयर। सो आई होप कि कल का मैच हो पूरी तरह से हो और खलल ना डले और एक्साइटिंग मुकाबला कल हमें देखने को मिले। थैंक यू सो मच असगर भाई, थैंक यू सो मच फारूक सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Good night.